Today we will understand पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. ठीक है. कब हम बोलते हैं कि दिस वर्क इज पॉजिटिव एंड व्हेन वी से नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क. वी विल टेक वन एग्जांपल. That means suppose we have taken a football. This is your football. ठीक है. Now, so suppose this football is in motion, in this direction, motion. Now, if we kick a ball from this side, kick, what will happen? What will happen? The ball attains a speed. है ना. जब हमने किक मारा तब क्या हुआ? बॉल अटेन्स अ स्पीड. और द मोशन उसका कैसा हो गया? इट विल गो इन एयर और इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. So now the kick is your force, and force is in the same direction of the motion. Now motion and force are in the same direction, therefore it attains a speed, or you can say it gains speed. Whenever motion and force are in the same direction, we used to say it's a positive work. So now we can write it as whenever motion and force are in same direction, is known as positive force. Now, after this speed, what happens? What happens? Slowly and slowly हमारी बॉल क्या होगी? रुक जाएगी. है ना. तो now we can say ball is stopped. तो बॉल हमारी स्टॉप कैसे हुई? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. है ना. फ्रिक्शनल फोर्स. तो नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव वर्क मीन्स व्हाट? यहां पर गेन स्पीड किया था, यहां पर क्या होगा? नो स्पीड, इट स्टॉप्स. है ना. इट स्टॉप्स. तो व्हाट वी विल राइट हियर? नेगेटिव स्पीड में आप क्या लिखोगे? whenever motion and force are in the opposite direction. Whenever motion and force are in opposite direction. Now comes to your zero force. What do you understand by your zero force? That means, zero work. What do you understand by your zero work? That means we have done work. We have applied everything, but work is zero. How it happens? Suppose we have a circular park. This is your circular park. And this is your gate. ठीक है. Now, अब देखो, आप रोटेट करना शुरू करो. आपने इसमें एक रोटेशन लिया and you have started from the gate and at the gate. So what happened? We know that work is equal to what? Force into displacement.
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. You can see here force is there, है ना, we are running by force, but displacement is not there. But he has completed the distance. He has completed the distance, but he has not completed the displacement. That means displacement contains your what? Magnitude as well as direction. Magnitude and direction. But if you start from here and adds at that point, that means your magnitude is 0 and it does not contain any direction also. That means क्या होगा आपका? W is equal to F into 0. That gives you 0. So now we can say the work is 0. आया समझ में सब? पॉजिटिव फोर्स में क्या होगा? दोनों मोशन एंड द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होंगे. और सेकंड वाले में नेगेटिव में क्या होगा? मोशन इस डायरेक्शन में एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज नेगेटिव. एंड वर्क में क्या होगा? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, एनीथिंग वी कैन से. ठीक है, दैट मीन्स वर्क इज 0. तो you can take the example of a circular park. This is your circular park. ठीक है.